السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حیدرآباد کے علاقے کاروان میں موجود سوجا گرامر اسکول میں اینول ڈے پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر طلباء اور ان کے سرپرستوں نے بھی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر اسکول کے ذمہ داران بھی موجود رہے۔ اس اینول ڈے پروگرام میں طلباء کی جانب سے بہترین مظاہرہ بھی پیش کیا گیا اور بہترین پرفارمنس کرتے ہوئے رقص بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی طلباء نے تقریریں بھی کی اور اپنے اپنے ٹاپکس پر اسپیچز دی ہیں۔ اس موقع پر بہترین مظاہرہ پیش کرنے والوں کو انعامات سے بھی نوازا کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ آگے بھی اپنی پڑھائی جاری رکھتے ہوئے بہترین مظاہرہ پیش کریں۔ اس موقع پر دیگر حضرات بھی موجود رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Your presence makes us very happy. Esteemed dignitaries of the day, management, parents, well-wishers, teaching and non-teaching staff, and dear children, I take great pleasure in welcoming all of you on this special occasion of our Kids Convocation Day, Graduation Day. Today, we gather to celebrate a wonderful milestone in the lives of our kindergarten graduates. It's a day filled with joy, excitement, and a little bit of nostalgia as we reflect on the journey we have taken together this year. To all the proud parents, family members, and friends, thank you for joining us to honor these amazing children. As I look at all of you, I can't help but smile. Each one of you has brought something unique and special to our school. From the moment we met at the beginning of the year, you have all grown in ways that fill my heart with pride. When my kids saw pre-primary, I remember some of you were a bit shy, while others were ready to jump right in. But as I went through the year, you have all blossomed into confident, curious learners. And of course, without our kindergarten teachers, this journey is impossible, and credit goes to our teachers, Miss Nada Begum, Miss Nada Begum, Miss Shima Fatima, Miss Faria Fatima, and Miss Mohammadi Sidra. I saw the confidence in them and they did a wonderful job. Thank you, teachers. Reach high, fall stars, lie hidden in your soul. Dream deep, for every dream leads the goal. As we approach to the end of the academic year and our many years of service towards providing quality education since our inception in 1992, I take this opportunity to thank the Almighty Allah for His abundant blessings and guidance from our patron saint parents, students, teachers, and well-wishers. There is a great saying, education is simply the soul of a society, as it passes from one generation to another. As we share the yearly updates of our activities, we take the modesty to say that we did our best as we had planned, and we are proud of our students and teachers who do hard to achieve beyond expectations.
To avoid lengthy presentation, the report will be a nutshell of all. I, Mrs. Shamsia Tabassum, Headmistress of Shuja Grammar School, take great pleasure in presenting the annual report of our school. The year 2024 to 25 is marked with many events and success stories. This can be attributed to the dedication and team spirit of the members of management, staff and students. Established in 1992, Shuja Grammar School has been preparing future of your children. We focus on the supporting all students to reach their potential academically, socially and emotionally. We have committed proactive 21 teachers to help each child to reach their potential. Our staff has high expectations and adopt a wide variety of innovative teaching practices. CCA, co-curricular activities, provides children opportunities to showcase their talents. Our school had celebrated Flowers Day, Green Day, Black and White Day, Fruits Day, etc. Of course, the academics. Coming to the academics, we have 4 FAs, formative assessment tests, and 3 main exams: SA1, midterm, SA2, summative assessment 1, midterm, summative assessment 2, to measure the academic standard of the children, as academics is very important to compete in this competitive world where they have to excel themselves. PTM, parent-teacher meeting, were arranged periodically to inform the parents about their child's performance. We cherish and thank all the parents for their cooperation and their constructive suggestion in our endeavor of imparting quality education. Ladies and gentlemen, along with this, various events are celebrated with a lot of joy and fun. Some of them are: firstly, investiture ceremony was celebrated with great joy. Election conducted for head girl, and we have 4 different houses, and with both these different houses, we have 4 different captains, along with 10 leaders of each house. Secondly, Independence Day was celebrated with great honor and patriotism. Teachers' Day, to celebrate it, that children have performed various programs for teachers as a token of love, management, honor the teachers. To show their love and affection towards the students, we have celebrated Children's Day. And of course, 26th January, we have celebrated. To make the children more active, independent, field trips have organized. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے انبیاء پر فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز دائس پر تشریف ذمہ دار مدرسہ، معزز والدین، معزز اساتذہ اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر، ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. تقویٰ سے کیا مراد ہے؟
تقویٰ کے کیا معنی؟ تقویٰ کے معنی ہے اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر ان کاموں سے رک جانا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ان کاموں کو کرنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کام ہے۔ وہ بنیادی اسلام کے وہ بنیادی 5 حقوق ہے۔ نماز سب سے پہلی ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اور حج۔ ان تمام فرائض کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور بھی کئی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، والدین کا ادب و احترام، والدین کی بات ماننا، ہر طرح سے ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی ہم کو فرمانبرداری کرنا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، اس کے بعد والدین، اور اس کے فوری بعد آتا ہے استاد کا مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم ہمارے والدین کی عزت و احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے استاد کا بھی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد جو ہمیں دنیا میں سر اٹھا کر عزت کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھی اپنے والدین سے بڑھ کر عزت و احترام کریں تاکہ دنیا میں ہم کچھ مقام حاصل کر سکیں۔ ہم جس طرح والدین اولاد کی کچھ حقوق ہیں، آئیے اب ہم والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس پر روشنی لانے کی میں کوشش کروں گی۔ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، حلال کپڑا پہنائیں، اور ان کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی خاص خیال رکھیں۔ گھر میں ایک کوڑا بھی لٹکائیں تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں، تاکہ وہ غلط راہ پر چلنے سے بچ سکیں۔ نماز، قرآن کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم پر بھی ہم والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نہ صرف ہم دینی تعلیمات بلکہ اسکول میں بچہ ہمارا دن بھر کیا کر کے آ رہا ہے، کیا پڑھ کر آ رہا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، وہ کیسے بات کرتا ہے۔ نہ صرف ماں باپ کی عزت احترام کرنے سے اس کا حق نہیں ادا ہوگا، تو تمام بڑے سڑک پر اگر کوئی بزرگ شخص جا رہا ہے تو اس کی بھی عزت احترام ہے۔ آئیے میں اور آگے بڑھتے ہوئے یہ کچھ ماں کے ساتھ اپنی باتوں میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ ماں جو ہوتی ہے، ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اس بات کا ذرا دھیان دیں، ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کر دی ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھی ہوگی، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم ماؤں کے چاہے وہ حدیث الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الوالد جنت ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ ہم کو عطا نہیں کیا ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کی کوشش کریں، ہم اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین تربیت دیں، ان کی بات سنیں، ان کے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ کیوں تبدیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کہاں ہم سے چوک ہو گئی۔ ہمارا شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں چاروں طرف سے ہم کو بھٹکانے میں لگا ہوا رہتا ہے، ہم ہٹا دیتا ہے ہمارے منصب سے۔ تو ہم تھوڑا سا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے، ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں۔ ایک اور بات ہے، ماں خود قرآن پڑھے، ایک بہت ہی اہم بات ہے، ذرا غور فرمائیں۔ ماں خود قرآن پڑھے اور اپنے بچے کو اللہ کے رسول کی پہچان کرائیں، سب سے بہترین تعلیم یہی ہے۔ بس ہم اپنے بچے کو یہ دیکھیں کہ میرا بچہ کتنی حدیث پڑھتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ بچہ پانی پیتا ہے تو کیا بسم اللہ پڑھتا ہے، کیا پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہم پر ہے، یہ ذمہ داری آپ کے ساتھ ساتھ اسکول میں ہم پر بھی عائد ہے، مگر ایک طرفہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری ہم دونوں پر ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں یا اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان کرائے اور ان سے محبت کرنا سکھائے، کیونکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، جن سے ہم
को लगाव होता है, हम उसकी हर बात मानते हैं। तो बच्चों से ये कहें कि अल्लाह ताला ये बात देखो बच्चों, अगर हम बिस्मिल्लाह कहें हर काम से पहले तो अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। बार 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 सुबह से शाम तक बच्चे को बार बार ये कहेंगे देखिए ये काम करने से अल्लाह ताला खुश होता है, ये काम करने से अल्लाह ताला नाराज होता है। बस एक छोटा सा अमल हमारे बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। और एक अहम चीज़ नमाज की ताकीद है। अगर हम बच्चों को ये कितना भी कह दें कि बच्चों को नमाज पढ़ लो, लेकिन जब कोई बच्चा मुझे ही नहीं देखता है नमाज पढ़ता हुआ तो वो कैसे पढ़ेगा? अगर एक माँ नमाजी है तो एक 9 माह का बच्चा खुद ब खुद सजदे में गिर जाता है जाने नमाज के हमसे पहले आकर। आमतौर पर हम ये मुशाहिदा अपने घरों में करते होंगे। तो पहले हम खुद पढ़ें, पहले हम अमल करें, फिर अपने बच्चों को इंशाअल्लाह ताला इसकी ताकीद करें। और दूसरी बुराइयों से भी हम खुद भी बचें, जैसे कि झूठ है, गाली है, लड़ाई झगड़ा, कीना, इंतकाम लेना। हमारे बच्चों के अंदर इंतकाम लेने की सिफत ज़्यादा बढ़ गई है, बखिलाफ के माफ़ कर देना। हम खुद बच्चों को पहले माफ़ करते जाएं, पहले उनके साथ नरमी से पेश आए। एक हदीस का मफ़हूम भी है ना कि अगर बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने के लिए कहो, अगर जब 10 साल का हो जाए तो उसे मारो। लेकिन पहले हमको भी पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद क्या अभी जो तमाम बातें, जो मुख्तसर सी बातें मैंने आपके सामने बयान की हो, क्या बच्चों ने सारी बातों पर अमल करना हमारे लिए फ़र्ज़ है? बेशक ये फ़र्ज़ है। जिस तरह अभी इंशाअल्लाह ताला हम रमज़ान से मिलेंगे तो जिस तरह रमज़ान के रोज़े रखना हम पर फ़र्ज़ है, उसी तरह इन तमाम यानी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, उस्ताद के साथ हुस्न सलूक, हम वालिदैन का बच्चों के साथ हुस्न सलूक बेहद ज़रूरी है। अगर हम इस बात पर ज़रा भी चूक पड़े तो शैतान हमारा खुला दुश्मन है, हमें हमारे इस मनसब से हटा देगा और अल्लाह के सामने हमको एक दिन जवाब देना होगा। लेकिन हदीस का मफ़हूम मैं आपको बताती चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का अमल उसके मरते ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं, 3 अमल ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। एक वो यानी एक सदका जारिया है, यानी कुआं खुदवा दे या मस्जिद बनवा दे या किसी दरख्त या कोई दरख्त लगवा दे। और दूसरा है वो इल्म जो हम छोड़ कर जाते हैं, किसी को अगर आप एक कलमा भी याद दिला दो, किसी को या एक सूरा याद दिला दो, और वो जब तक ताउम्र पढ़ते रहेगा हमको उसका सवाब इंशाअल्लाह ताला मिलता रहेगा। और तीसरा है बेहतरीन औलाद। गौर फरमाइए, बेहतरीन औलाद हमारी सवाब जारिया बन सकती है, या फिर हमारी तरबियत की वजह से वो अगर बिगड़ जाए खुदा न खास्ता तो हमारे लिए अज़ाब जारिया भी बन सकती है। अल्लाह ताला यूं ही हम तमाम को बेहतरीन अजर से इंशाअल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह ताला बेहतरीन अजर से और बेहतरीन हमको माओ को बेहतरीन अपने बच्चों को तरबियत करने वाला बनाए। आइए मैं जहाँ अपनी तकरीर की शुरुआत की थी सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से उसका मुख्तसर तज़किरा करना चाहती हूँ। रमज़ान से मिलाए, हमें रमज़ान की नेमतों से, बरकतों से, मग़फ़िरतों से माला माल अता फरमाए। रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सहरी खाएँ और अपने बच्चों को सुला दें, बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को उठाएँ, स्कूल भी जाएँ, क्योंकि अनकरीब हमारा ऐसे तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला दीन के साथ साथ दुनिया का भी हमको काम करना है। तो मैं फिर अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हमको बेहतरीन वालिदैन बनाए और हमारी औलाद को हमारे सवाब जारिया बनाए और हमें रमज़ान से मिलाए पहले और उसमें हमारी मग़फ़िरत हम अता फरमा दे। आमीन व आखिर दावा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। On the dais, respected teachers, parents, and my dear friends, good evening, everyone. Today, I am here to present a speech on importance of education. Here, we all know that education is a ray of light in darkness. Education plays a very important role in everyone's life. It is a hope for a better life. Education is a basic human right. It provides freedom and empowerment to everyone. It makes us independent and provides us a good career, good lifestyle, a good status in the society, and make us self-confident. Education also helps us become successful and a better person. Education improves our knowledge, skills, confidence level, and personality in today's competitive world. Education has become necessity. Today, education is required in all fields of life, but good education is required is foundation
equality, remove gender inequality, promote women and children rights, remove corruption, and many more. Education, we also need to remember that education is not only a means of acquiring knowledge about various subjects, it makes us smart enough how to learn how to live, how to treat others, and how to handle every situation. Overall, education helps us to become a better person. At last, I would like to end my speech with a quote by Mr. Nelson Mandela: "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Thank you. Dear parents, principal, teachers and friends, good evening everyone. I am Rahim. Welcome you to our school graduation ceremony 2025. First of all, I would like to thank Madam the foreign and support you have given to me. Thank you for sending me to this outstanding school. We have had good times in the school and learned helping each other. Now we are going to graduate and we feel elected to lead on the occasion. I will present all of the training students to express our gratitude. Dear teacher, thank you for your love and hard work to educate us. Please leave us. We will continue strive to better for our future. On behalf of our school, we are very grateful for your continued support. Wishing all of you have a pleasant night. Thank you. Well done, very nice, excellent. Please give her a big round of applause one more time. Praise and thank the presence of greatest Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing and guidance. The salawat and greeting we pour out to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us out of the dark ages to the era of bright light today. As we are always on the right path until the end of the world. Honorable correspondent sir, co-correspondent ma'am, headmistress ma'am, teachers, parents, students, and my little graduates. A very good evening to you all. As we gathered to celebrate a remarkable milestone in the life of the young learner, kindergarten graduates. Today, these little graduates came to end to one beautiful chapter and the exhibiting being of another chapter. As an academic advisor, I have had the privilege of watching these wonderful children grow, learn, develop into the curious, confident individuals. It is not just about the academic knowledge they have acquired, but the values, friendships, joy of learning that they will carry with them in the future. Parents, thank you for your unwavering support. We have been there every step of the way, encouraging your children and fostering an environment where they could grow and thrive. Your involvement in their learning journey has made all the differences. Once again, thank you for your support. Teachers, thank you for your dedication and tireless effort in nurturing these little ones, little young men. You have been their first mentor, their guide, and their biggest cheerleader.
Your passion and your patience have shaped them into the incredible individual they are today. Thank you once again, teachers. And to our graduates, congratulations. You are the star of today. And today your day is to shine. You have worked hard. Now you are ready to take a new challenges and experience. As you step into the next chapter of your educational journey, remember to keep your sense wonder, to always ask questions and to continue to explore and grow. Once again, congratulations to our little graduates. May this be the first of many, many successes in your academic journey. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you with success, good health, happiness, patience and strength. May Allah bless you with victory in your life. Amen. Ameen, Subhan. Thank you very much, ma'am. That was an inspirational speech for us. And thanks for your gratitude towards the teacher. And now, I would like to call upon our correspondent sir to address the gathering. And I want all the children to be patient. See, we have some programs, yes. But if you become restless, how? All the participants also becoming very restless. Please be patient. Wait for the moment. The moment will come. Now please welcome our sir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Honored and distinguished parents, very respected teachers, dignitaries on the dais, my very dear students, ex-students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, I will not take much more time because you are very impatient, and what all I have to say, I will keep on saying in the school hours. I will pass on two messages to you to take this opportunity, as most of the parents are present here. Parents, APAR ID now is very essential. And to create APAR ID, one has to have your child's Aadhaar card. Only the Aadhaar card of the child and the parents hold good to take the APAR ID. Our computer ID will help you in doing that. Those parents whose marks are not having Aadhaar cards, go to the Aadhaar center nearby. There are two Aadhaar centers here. One is in Government Girls High School, Mustaipura. The other is in Talagada, Reliance High-Tech Techno School. You will have to spend just 10 minutes of time there, and you will have your cards, Aadhaar in a couple of days. So try to cooperate with the administration in getting your APAR ID. APAR ID in the future will hold good for your work, facing the interviews, going somewhere. It is just as Aadhaar card to the elders. Your work can face the interview just by having APAR ID in your phone only. In your phone only, he can face the interview and inshallah fly high from the Suja Grammar School to the greatest of the high
that holds for him. The other important point I'd like to give is, with the grace of Almighty, the management of Shuja Grammar School has arranged Tarawih for the ladies from Chandra. Hafiz Muhammad Ikram Sahib will recite 3 paras daily, and Namaz al-Sham, inshallah, will start by 8:30 p.m. Namaz Tarawih from 8:45. Inshallah, do attend, ladies, and have the pleasure of the Ramadan along with your rosas. Thank you very much. These few words I take you, and blessings for my 10th class students, those who are going to write the examination in the month of March amidst the third Daha. Inshallah, with the barakah of the third Daha, this batch will give us, this being the last batch of the CGPA, inshallah, this is alluding us, inshallah, these boys and these boys will score 10 on 10 CGPA, inshallah. Say Ameen, everybody, Ameen. Thank you very much. मैडम साहबा और प्राइमरी इंचार्ज मोहतरमा तहसीन मैडम साहबा, तमाम टीचर्स, प्यारे बच्चों और तलबा, तमाम पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस महफिल में आप तमाम का दिल से इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर होंगे, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ हमें आज इसने ये मौका इनात फरमाया कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर स्टेज पर इनामात लेते हुए देखें, प्रोग्राम करते हुए देखें और खुश हों। आज मैं ये तमाम वालिदैन को मुबारकबाद दूँगी जिनके बच्चे प्री ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हैं, हासिल किए हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में और बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुजा ग्रामर स्कूल ने अपने 33 साल मुकम्मल किए हैं और अपने सफ़र में बहुत से कभी दवा हैं और कामयाबी के साथ अपनी मंजिलें तय कर रहा है, और इस कामयाबी के पीछे सर और तमाम टीचर्स का हाथ है जो एकजुट होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं और तलबा को म्यारी से म्यारी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर असरी तालीम के साथ साथ उर्दू, दीनियात और अखलाकियात की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाती है जो काबिल तारीफ है, क्योंकि हमारे तलबा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बदौलत दीन से दूर हो रहे हैं, इसलिए तलबा को भरपूर दीनी माहौल देने की कोशिश की जा रही है। हर रोज असेंबली में दीनियात टीचर का बयान होता है, अहादीस सुनाई जाती हैं ताकि बच्चे दीन से दूर ना हो। ज़ोहर और असर की नमाज बजमात स्कूल के अहाते में अदा की जाती है, जिसका मुशाहिदा स्कूल आने वाले तमाम पेरेंट्स देख सकते हैं। मैं तमाम तलबा से मेरा यही पैगाम है कि खूब पढ़ें और अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद मुकर्रर करें और इसके हुसूल के लिए जद्दोजहद करें। वक्त की कदर करें और अपने वालिदैन की कदर करें। जो बच्चे अपने वालिदैन की कदर करते हैं वो हमेशा कामयाब और कामरान होते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए
काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी को सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को मुख्तलिफ रिश्तों में तोड़ा है। इनमें किसी को बाप बनाया, किसी को माँ और किसी को बेटा और बेटी। गैस रिश्ते बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इनके हुकूक भी मुकर्रर फरमाए। इन हुकूक में हर एक को अदा करना है, लेकिन वालिदैन को हक को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी बंदगी और इताअत के फौरन बाद जिक्र फरमाया है। ये इस बात का इशारा है कि रिश्तों में सबसे बड़ा हक वालिदैन का है और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। औलाद को ये सोचना चाहिए कि वालिदैन ना सिर्फ मेरे वजूद का सबब है, बल्कि आज मैं जो कुछ हूँ इन्हीं की बरकत से हूँ। और वालिदैन हैं जो औलाद की खातिर ना सिर्फ हर तरीके की तकलीफ, परेशानी और मशक्क़त को बर्दाश्त करते हैं, बल्कि अपना आराम और राहत, अपनी खुशी व ख्वाहिश को औलाद की खातिर कुर्बान कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहाँ अपना शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है, वहाँ साथ साथ वालिदैन का भी शुक्रगुजार बनने का हुक्म दिया है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, इनके साथ हमेशा नरमी से बात करें और उनकी रज़ा में राज़ी रहें और खुद भी उनके लिए दुआएं करते रहें। जो बच्चे वालिदैन की बात सुनते हैं और उनकी खिदमत करते हैं, वो बच्चे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होते हैं। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम अभी लंबा बाकी है। लबों पे इनके कभी बददुआ नहीं होती, लबों पे इनके कभी बददुआ। Myself Nehveen Fatima from 7th class. अपने अंदर एतमाद पैदा करने वाली नज़्म हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। मुलाहिजा फरमाइए। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ दिखाने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखना है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं ना। अगर रहना है तो बच्चा बनकर है, समझदार बनाने के लिए लोग हैं ना। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं ना। तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं ना। खुद की अलग एक पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। जज़ाकल्लाहु खैरा। Our co-correspondent ma'am, our co-ministers ma'am, academic, Naida Veena ma'am, and our board in charge, teachers, parents, and my dear students and colleagues. All good things come to an end with great honor. I, Bishra Fatima, take the opportunity to thank our correspondent sir, Mr. Edeshano bin Badar sir, for raising this occasion a memorable one. I thank the management for the support and inspiration. Thank you so much for our encouragement, which has given us impetus to put our best forward. Congratulations
big hand to us, make us feel great and honored. Thank you for the respect for us. I also thank our non-teaching staff. Nothing can be completed